Hello, Assalamu alaikum. I just want to start by saying that I have been going through all the comments and I've been getting messages. मुझे Instagram पे और YouTube पे messages आ रहे हैं, comments आ रहे हैं कि where have you disappeared, where is your new vlog and all that. So I just want to start by saying that I spent 2 weeks without my husband and he's finally here now because like I said कि मेरे ससुराल में शादी थी जिससे मैं कल basically फारिग हुई हूँ. So tomorrow is the walima and then it's done dusted. So Talha is only here for a week and as a newlywed having spent 2 weeks apart is also a very big deal. तो इसलिए जितना भी हो सकता है we're trying to go out. वैसे भी शादी घर में काम कितने होते हैं सबको पता है. So first things first. दूसरी बात ये है कि I am, again I've said this before but I'll say it again, I am so overwhelmed कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैंने ऐसा किया क्या है जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है. But I feel amazing and for everyone asking me कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ और बाकी लोग कहाँ हैं, तो I am back in Karachi and my parents, Mama, Daddy, Nabiha, Iman, Ania are in Islamabad still और वो लोग आ रहे हैं कल for the walima. मेरे जेठ के वलीमे के लिए वो लोग कल आ रहे हैं और this is the first video that I'm doing all by myself. मेरे पास ना ईमान एडिट करने के लिए है ना मेरे पास ब्रो मुझे सिखाने के लिए है. So I'm very nervous of course because this is the first time doing everything by myself. So I have a very interesting story that I want to share with everyone और पता नहीं कौन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है लेकिन I feel like I had the adventure of a lifetime. अब सैटरडे को तलहा की जो फ्लाइट थी that was landing and he had a 10-hour layover in Dubai and so I was gonna land in Karachi from Islamabad at 5 p.m. and Talha was landing at 9 p.m. तो मेरे पास वो 4 घंटे थे till I had to go pick him up at the airport. तो मैंने एक पूरा प्लान बनाया था कि मैं लैंड करूँगी, मैं घर आऊँगी, घर आके फिर मैं चेंज करूँगी, I'll get dressed, I'll go to the salon, I'll get a nice manicure, फिर मैं जो हूँ I'm gonna go जाके फूल लूँगी, फिर एयरपोर्ट जाऊँगी तलहा को पिक करने के लिए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Like I had planned everything so carefully. टाइम से उठी, टाइम से सोई, बल्कि सोई भी नहीं थी मैं तो. मैं, अली, अनिया, वी वर अप ऑल नाइट. जो हमने लास्ट व्लॉग बनाया था उसमें हमने बोला भी था कि सुबह के 7 बज रहे हैं. मेरी फ्लाइट थी 3:30 बजे दोपहर की. तो हम वी वर अप ऑल नाइट. हम लोग रात के आई थिंक हम लोग कोई 8 बजे सब लोग गए अपने अपने कमरे में सोने के लिए और मुझे लाइक इतनी जल्दी नींद नहीं आई. तो 10 बजे जाके आंख लगी और 12 बजे मैं उठ गई कि मैं कॉफी शॉफी पी के निकल जाऊँ. एंड आई वॉन्टेड कि मैं तैयार होके ही निकलूँ एक दफ़ा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एयरप्लेन में लाइक यू नो एयरप्लेन से उतरते ही ऑब्वियसली नहाते हैं बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं और ट्रैवलिंग मेक्स यू whatever. But anyways, my point is it was a bad decision because I traveled on the worst flight of my whole life. पहले तो ये था कि I was very excited to see Talha after 2 weeks. You know, being a newlywed, it's a very big deal to be away from your partner for 2 weeks. So I was really looking forward to it. Like I was very excited. बहुत खुशी हुई थी मुझे. तो everything that I planned उसमें से मजाला जो एक चीज हुई होगी, everything went upside down. Ania and Ali dropped me at the airport on time. हम लोग रास्ते में अभी Ali, I don't know वो vlog कब लगाएगा लेकिन he recorded us going to the airport, saying bye, everything. I don't know when I'm gonna see Ania and Ali again because I don't think वो कराची के चक्कर लगाएंगे अब जब तक मैं जाती हूँ तब तक. So I'm here for another few weeks लेकिन I don't know उन few more weeks में अली और अनिया का आना होगा या नहीं. तो मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ. I was on time, boarded the flight. I met Talha was away. He was in Dubai. जहाँ उसका layover था. I was texting him कि सही है, I'll land इतने बजे, I'll come pick you up at 9 o'clock. सब कुछ सही हो जाएगा. जहाज में बैठ गए हैं, सबने हो गया, अनाउंसमेंट हो गया सबका कि भाई कि ready, you know, like everyone seated, cabin crew, something, whatever. And the plane wasn't moving. सही है, मतलब मैं देख रही हूँ कि सब लोग बैठे हुए हैं और जहाज was fully loaded. मतलब कि एक कोई सीट जो मजाला जो खाली थी और मेरी सीट जो थी वो बहुत ही कोई अजीब सी सीट थी, कोने में बिल्कुल जो विंडो सीट नहीं होती है. इट वाज अ विंडो सीट इन द कॉर्नर विदाउट अ विंडो. सो आई वाज ऑलरेडी वेरी crammed and stuffy, but again I was just like my main focus is to get there in time so I can do everything as planned. But like I said, nothing happened as planned. Okay, so everyone was seated and I'm like, so the plane's gonna go in taxi now and we're gonna take off, I'm gonna land, everything's gonna be perfect. But that didn't happen. The captain announced that
made an announcement saying that everybody please get off the plane because the door of the plane wasn't closing. And I was just like, what is happening? At that moment I had a very bad feeling कि भाई ये तो जैसे मैं जा रही थी वैसा कुछ भी नहीं होगा, तो this is gonna be like a little bit of problem. खैर हम लोग जहाज सब लोग उतरे हैं, उसके बाद पूरी हबर दबर मची हुई थी, लाइक जो पूरा गेट था वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं. There was a lot of, you know how Pakistani people are, they barely have any hold over their temper, myself included of course, because I really wanted to be here and I wasn't, and I had a feeling that I wasn't going to be here on time and जो मेरा प्लान था वो सारा खराब हो जाएगा, तो I was also very on edge. तो चीखम चाखी हो रही है हर जगह, ये क्या मसला है, जहाज में क्या मसला है. तो मैं जब जहाज से उतरी तो एक साहब थे, he figured out what's going on apparently and I had no idea. He said that जो जहाज का दरवाजा होता है basically, उसकी जो रबर होती है basically that pressurizes the cabin or whatever the physics is, I don't know the technicalities of it all, but the door when it closes there's a rubber between it that keeps the air from going in or out. Please, this is like I'm explaining it to you in layman terms, so please deal with it. तो वो जो रबर थी ना वो गायब हो गई थी basically, वो दरवाजे के अंदर चले गई थी, तो there was like a little bit of gap, तो जहाज के दरवाजे में से हवा आ रही थी or something like that, like there was like a bit of air passing through. ये था. तो जब हम लोग उतरे जहाज सब लोग इकट्ठे हुए हैं लाउंज उस पे गेट में, तो turns out that was true. उन्होंने बोला कि यही है. मैंने बोला कि कब तक ठीक हो, उन्होंने बोला कि अभी हम लोग मेंटेनेंस को फोन करेंगे, मेंटेनेंस आएगी, दरवाजा ठीक करेगी, फिर हम लोग ये फ्लाइट बोर्ड करके जाएंगे. एंड आई वाज लाइक उसमें कितनी देर लगेगी? 3-4 घंटे लग सकते हैं. 3-4 घंटे meant that Talha was gonna land when I wanted to receive him, and I'm there standing at the airport in my night suit and I'm just thinking about everything that I had to do and I couldn't do. तो खैर I hadn't eaten breakfast because I was in a hurry because I wanted to make my flight in time. तो मैं गई हूँ जल्दी में और मैंने फिर अन्या को फ़ोन किया. अन्या को मैंने पूरी सिचुएशन बताई. मैंने कहा अन्या ये हुआ है. शी इज़ लाइक अच्छा रुको तुम्हारी वाली फ्लाइट रिफंड कर देंगे हम लोग, तो लेट मी फाइंड अनदर फ्लाइट. और उस दिन की और कोई फ्लाइट्स नहीं थी. फिर मेरी अम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला बेटा तुम एक काम करो, तुम बस में चली जाओ, सही तुम्हें जाना है तुम बस में चली जाओ, या तुम कल तक रुक जाओ और ये कर लो. मैंने कहा कि ही इज़ हियर फॉर लाइक 7 days, आई डोंट वांट टू वेस्ट लाइक अ होल डे या जो भी, एनीवेज बट आई रियली वांट टू बी हियर. मतलब मुझे आना था कुछ भी करके, लाइक मेरा आई एम बिट स्टबर्न इन सम सॉर्ट ऑफ वे. सो मेरा ये था कि भाई जब मैंने एक चीज़ सोची हुई है तो मैं प्लान के मुताबिक ही हो, और जब वैसे नहीं होती है तो इट रियली messes with my head and I don't like that. You know, I don't do well with change, whether it's a plan, whether it's something that I use. I just don't like things changing. तो मैं बहुत I was just डटी हुई थी मैं कि मुझे आज ही जाना और बस जाना ही जाना है. खैर उसके बाद वहाँ पे खड़े खड़े उसी फ्लाइट में मुझे एक माँ बेटी मिली, उनसे मेरी बातचीत हुई. इत्तेफाक की बात है कि दे लिव इन कराची एंड दे लिव इन द सेम सब डिविजन दैट आई लिव इन. तो वी एक्सचेंज नंबर्स, वी वर टॉकिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड. मतलब कि हमने बातचीत की, कोई जाए कोई रिपोर्ट लेके आ रहा है कहीं से, कोई जाए कोई रिपोर्ट लेके आ रहा है कहीं से. खैर 1-2 घंटे गुजर गए इसमें. उन्होंने बोला फिर क्या हुआ, काउंटर के आसपास बहुत रश लग गया, सब लोग अपने NSC लेके जा रहे हैं. मैंने कहा अब क्या हो रहा है. मैंने कहा भाई साहब क्या हो रहा है. बोल रहे हैं कि ये जो है बोल रहे हैं कि जहाज का दरवाजा ठीक नहीं हुआ है, तो ये जहाज ऐसे ही जा रहा है लेकिन इट्स सेफ, लेकिन जिन लोगों को नहीं जाना है उनको वो रिफंड भी करेंगे और फ्री टिकट भी देंगे, लेकिन जिनको जाना है वो जाएंगे, लेकिन दरवाजे की कैपेसिटी की वजह से हमें थोड़ा सा वेट ऑफलोड करना पड़ेगा. तो वी आर ओनली टेकिंग 85 पैसेंजर्स. तो वो जो बाकी सब उन्होंने जो रश लगाया था काउंटर के आसपास, दे वर ऑल देयर फॉर अ रिफंड कि हमारी टिकट रिफंड करें एंड वी वांट अ फ्री टिकट. दैट वाज Sweetener गिविंग देम द कॉम्पनसेशन कि फ्री टिकट बेसिकली फॉर व्हाटएवर ट्रबल वाज कॉज्ड. आई हैव टू गिव इट द एयरलाइन दो, दे हैंडल एवरीथिंग वेरी वेल. आई मीन मसले हो जाते हैं बट नोबडी वांटेड टू गेट ऑन द प्लेन. बहुत कम लोग थे आखिर में जो बोलते हम लोग चले जाते हैं, अल्लाह का नाम लेके चले जाएंगे. फिर मैंने फैमिली ग्रुप पे मैसेज किया पूरा, मैंने कहा ये सीन है और मैं तो जा रही हूँ. तो नबीहा और मामा का रिप्लाई कि डोंट टेक द रिस्क, और नहीं जाओ, बस में चली जाओ, कोई और फ्लाइट देख लेते हैं, हम कल तक वेट कर लो. मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बस दुआ करें, कुछ नहीं होगा, चले जाते हैं. अब मैंने इतनी लाइक आई एक्टेड ऑल ब्रेव एंड ऑल, बट व्हेन आई गॉट टू द प्लेन, व्हेन द प्लेन वाज अबाउट टू टेक ऑफ, तो आई वाज वेरी 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 स्केयर्ड. तलहा बोला था कि भाई कि आई वॉन्ट यू हियर बट आई वॉन्ट यू अलाइव, तो देख लेना. खैर एनीवेज उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन वी हैड द 85 पैसेंजर्स जो जहाज में जा रहे थे, जिनमें से मैं एक थी, अब जो पूरा सामान लोड हो गया जहाज पे पूरे पैसेंजर्स का, वो नहीं जा रहे हैं. अब पूरा सामान निकला है, बारी बारी जाके जो बंदे हैं वो अपना सामान ले रहे हैं. इसमें टाइम लगा कोई 1-2 घंटे इसमें लगे हैं. एंड देन
मतलब एक के बाद एक चीज़ थी, पीपल वर स्केयर्ड. जिन माँ बेटी से मेरी बातचीत हुई थी, their husband and father was a captain. उन्होंने बोला कि I don't think this flight, he's like this flight safe, but I just don't want you to take the risk, so don't go. मैंने कहा सही है, ठीक है. मैंने कहा मैं तो जाऊंगी. मैंने कहा I have a death wish, I'm gonna go. खैर, this was the worst flight of my life. It was the worst flight of my life because I think कि जो flight miss हुई है, इतनी 3-4 घंटे का delay हुआ है, उसकी वजह से all the क्या बोलते हैं उसे, air traffic control and all that was all messed up, and इतनी waiting थी. We had to wait to take off. We had to मतलब land होके clearance के लिए wait करना पड़ता मैं कि भाई land होके how we're gonna get off, किस terminal पे हम लोग जाके like you know उतरेंगे, कहाँ क्या होगा. खैर anyways, जहाज में बैठ गए हैं, no AC during the whole flight for some reason. अच्छा नहीं, इससे पहले जहाज में जब हम लोग आए हैं तो फिर पूरे जहाज में मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ एंड में जाके सीट सोई सी थी और उसके ऊपर लिखा था out of order or something. So that वो देख के थोड़ा सा was like a little bit scary कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि maybe I made a mistake, like maybe this is really dangerous. लेकिन फिर I was like कि और भी लोग हैं तो you know I'm not the only one, so I'm not the only one who's stupid. सोई भी सिर्फ 2 घंटे की थी, लेकिन मुझे फ्लाइट में नींद बिल्कुल भी नहीं आई बिकॉज दैट्स हाउ स्केयर्ड आई वाज. जरा सी टर्बुलेंस आई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, मैं कलमा पढ़ने लग जाऊँ बार बार बिकॉज दैट्स हाउ स्केयर्ड आई वाज. इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज माय प्लेन लैंडेड एट 9 एंड आई स्वेयर टू गॉड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. लेकिन ये जहाज मेरा है, सही यूं जा रहा है, और ये मुझे एमिरेट्स का जहाज इसमें तलहा है. It was the same time. It was the exact same time. I had no luggage. I only had one bag. मेरे पास हैंड कैरी में ही था. तो मैंने वहाँ से वो अच्छा जहाज जब लैंड कर गया है, 45 minutes we were in the plane. 45 minutes तक we were in the plane and then again चीखम चाखी हुई, लोग चीख रहे थे बिकॉज बच्चे फ्लाइट पे you know सांस नहीं आ रही है और मतलब there's no airflow whatever, there's no ventilation, प्लेन बंद है, डोर्स नहीं खोल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं ये. तो 40 another 45 minutes we were in the plane after the plane landed. जहाज में इतने सारे लोग हैं, मतलब कि एक ही उसमें, and it was suffocating basically. तो उससे और frustration हुई and AC था नहीं बिल्कुल भी, तो और I was like you know okay, so much for me getting ready and looking all nice and going to receive my husband at the airport looking all pretty. All that plan basically went down the drain. But anyways I was like अब जो भी है जैसा भी है ठीक है, just like you know whatever, it's for the better. I got off the plane और 45 minutes बाद, और उन्होंने प्लेन से कैसे उतारा 45 minutes बाद, इस मतलब के उसमें भी वो जो वो नहीं होती, what do you call that, the staircase, वो भी नहीं था. तो उन्होंने बस staircase लगाया और हम लोग जो है ना बस जहाज खड़े हैं, बस पूरे उसमें हम लोग खड़े हैं कि क्या हो रहा है ये, मतलब there was no bus to take us from the plane to the gate of the airport. It was really something. This flight was really something. But my point was कि हम लोग मतलब जब लैंड किए या बोर्ड करे तो तालियां बज रही थी, मतलब it was such an adventure. तो फाइनली जब वो बस आई है, हम लोग बस में बैठे हैं, फिर हम लोग एयरपोर्ट से निकले. मैं तो सबसे आगे भाग के मैं डोमेस्टिक अराइवल से निकल के नेशनल अराइवल्स की लाइन में लगी हूँ मैं, और दुबई की फ्लाइट जो थी जिस पे तलहा आ रहे थे, सारे वो लोग निकलने लग गए थे. एंड मैंने बैक पैक खोला, अपना मेकअप वाइफ से पहले मैंने मुंह साफ किया, मैंने ऐसी ब्रश वश करके मैंने ऐसे लाइक यू नो बस ऐसे खड़ी हो. दैट वाज द मोस्ट आई कुड डू. एंड so I just thought about like you know what my plan was and what eventually ended up happening. Fair, everything worked out in the end, of course, because he's here now and the wedding went great, alhamdulillah. Sab kuch ho gaya khair khairat se. He's here for another couple of days and I am going to introduce you to him tomorrow because right now he's very tired and he's sleeping. So tomorrow, because a lot of people have been asking me that we really want to see him, tala se milwaye, introduction karaye and all that. So let's see tomorrow. Basically there's a reason that I don't it took me a very long time myself to develop the kind of confidence to be able to do this, all thanks to bro and Anya and my mom. But I know that there's some people जो उनको खैर मैं क्या बोलूं, लेकिन they just have, there is this saying that's my favorite saying and it goes like, if you don't have nothing nice to say then don't say nothing at all.